ऐसे रख रहा हूँ, इनिशियली डाइपोल को -q चार्ज को इधर रख रहा हूँ और +q चार्ज को इधर रख रहा हूँ, ऐसे रख रहा हूँ। यानी मैंने इनिशियल ऐसा फिक्स कर दिया कि अगर मैं डाइपोल को रोटेट करूंगा तो मैं डाइपोल को कहां से रोटेट करूंगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री से रोटेट करूंगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री से रोटेट करूंगा। अब मैं 90 डिग्री से उसको रोटेट कहां पर लेकर जा रहा हूं, किसी भी थीटा पर लेकर जा रहा हूं, थीटा चाहे इधर को ले जाओ या इधर को ले जाओ, मैं उसको थीटा पर लेकर जा रहा हूं। नाउ हमारे पास गवर्नेंस का फॉर्मूला क्या है, दैट इज माइनस, अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे थीटा का cos 90 है 0, तो ये कितना रहेगा, थीटा इक्वल टू थीटा तो -p cos थीटा। अब इसमें इस बात पे ध्यान रखना है, यहां पर हमने इनिशियल एंगल क्या लेकर चल रहे हैं, इनिशियल एंगल है 90, यानी मैं उसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं, तो ये मेरा फॉर्मूला है -p cos थीटा। अब ये जो वर्बल होता है बॉडी के अंदर क्या होता है, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होता है, तो बर्नर का फॉर्मूले की जगह हमने डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, दैट इज -p cos थीटा। अब हमारे पास अगर ये p cos थीटा है तो ये p cos थीटा का ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, यानी p वेक्टर डॉट p वेक्टर लिखते हैं। अगर इसको खोलूंगा तो देखिए p cos थीटा बन जाएगा, मैग्नीट्यूड टाइप, ये फॉर्मूला सभी को समझ में आया, ठीक है। अब एक और बात, सबसे पहले हमने स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस है और कंपटीशन में इन्हीं कांसेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट, ऐसे पढ़ा इनिशियल एंगल। हां हां, हम उसको कहां से कहां पर लेकर आए, 90 डिग्री से 0 डिग्री पर लेकर आए, तो हमने देखा कि हाँ तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना डाइपोल का, तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दैट इज -p cos 0, दैट इज -p। और एक बात याद रखनी है, -pe क्या है, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपसे कोई बोलता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 है, नहीं, डाइपोल की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -p। क्या 0 मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं, P is the maximum potential energy. P is the maximum potential energy. P is the maximum potential energy, and that is at the angle of 180 degree. 90 degree पर potential energy 0 है, but वो ना तो maximum ना minimum, ना maximum है ना minimum है। अच्छा, अब एक बात को समझना, एक बात अभी रुक जाओ, इधर समझ देखो भैया, हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये मार्कर को है ग्राउंड से, इस मार्कर को ये जैसे नीचे ग्राउंड पर पड़ा है, इसको मैं ग्राउंड से ऊपर लेकर जा रहा हूं, मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, ऊपर लेकर जा रहा हूं। अच्छा, अब एक बात याद रखना, नेचर में एक बात नेचर में याद रखना, मैं कभी भी किसी बॉडी को अलाउ करता हूं ना टू मूव, it always goes towards the its minimum potential energy, minimum potential energy। जितना वो अपना minimum potential energy लेकर आ सकता है वो लेकर आएगा। अगर मैं इसको यहां से छोड़ता हूं, यहां से छोड़ता हूं, कहां पर गया, नीचे, कहां तक जा सका, इस बोर्ड तक जा सका, और अगर मैं यहीं से छोड़ता, थोड़ा आगे करके छोड़ता तो ये यहां पर आकर रुकता, इससे भी minimum potential energy पर जा सकता था, तो ये यहां तक जाता, और इसके अगर मैं बाहर लेके जाता तो ये और भी नीचे चले जाता था, इट इज अलाउड टू। यानी कि हर बॉडी अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहती है, हर बॉडी अपनी कहां पर जाना चाहती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाना चाहती है। इसीलिए मैं जैसे ही बॉडी को छोड़ता हूं, डाइपोल को छोड़ता हूं, डाइपोल कौन से एंगल के अलाउंग लाइन होना चाहता है, अलाउंग द स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अलाउंग लाइन होना चाहता है अपने आप को। तो इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का दिस इज -p इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर क्या है, थीटा इक्वल टू 180 पर क्या है, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है, सो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल। इसमें एक नोट बनाओ और लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
of an electric dipole in an electric field is minimum और ब्रैकेट में लिख लो बेटा is minimum और ब्रैकेट में लिख लो माइनस when the dipole is parallel to the direction of electric field, when the dipole is parallel to the direction of electric field, full stop, the dipole is in the state of liquid. The dipole is in the state of stable equilibrium. The dipole is in the state of stable equilibrium. और ऐसे करके dipole is in the state of stable equilibrium. ऐसे सेकंड लिख लो, सेकंड फोल्ड करके लिख लो. Electric potential energy of dipole, is maximum और ब्रैकेट में लिख लो Pe, positive Pe, when it is anti-parallel to the direction of the electric field, full stop, the dipole is in the state of unstable equilibrium. The dipole is in the state of unstable equilibrium. देखो बेटा क्वेश्चन देखो, राइट डाउन वन क्वेश्चन. An electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 8 nanocoulomb. Separated by a distance of 8 centimeter. The dipole is placed in external field of electric field of 5 into 10 raised to power 5 Newton per coulomb. What is the maximum torque
what is the maximum torque dipole experience in the field? What is the torque dipole experience in the field? Experience in the field. Very good. Units? Newton meter. यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या करना चाहिए? PE sin थीटा लगाना और थीटा का वैल्यू 90। 32 into 10 to minus 4
4 into 10 is power minus 30. 4 into 10 is power minus 30 किलोमीटर. ये dipole moment given है, right? Is in uniform electric field. Is in uniform electric field of 6 into 10 is power minus 4. ना 6 into 10 is power 4, sorry. Minus 4 नहीं है. Newton per coulomb. The dipole is aligned along the electric field. The dipole is aligned along the electric field. यानी कि आपको थीटा 1 की वैल्यू कितनी गिवन है? थीटा 1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 0 डिग्री गिवन है. ठीक है, राइट? Aligned along the electric field. Calculate the potential energy of the dipole. Calculate potential energy of the dipole to keep the dipole at an angle of 60 degree. To keep the dipole at angle of 60 degree. Angle of 60 degree with the electric field. Minus देख माइनस आएगा या प्लस आएगा? देख यहाँ पर वो माइनस पी ये फॉर्मूला है माइनस पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा. और अगर तो यहाँ पर कॉस 60 का वैल्यू पुट करेगा वो कितना आएगा? हाफ आएगा. ठीक है, दैट इज हाफ माइनस कॉस 0 इज 1. तो वो नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव नेगेटिव से वो पॉजिटिव बन जाएगा. तो एक बात का ध्यान रखना है, ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया इसमें थीटा का वैल्यू 90 लेकर चल. तो ये फॉर्मूला है. जब क्वेश्चन में उसने बोल ही रहा है वो एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारा ये है. आपने इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला है वो दैट इज माइनस पी पावर थीटा टू माइनस कॉस थीटा. अब वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको अलाइन का अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो थीटा इक्वल टू थीटा का वैल्यू 0 डिग्री बोल रहा है ना कि 90 डिग्री. वो 0 डिग्री से 60 डिग्री पर लेकर गया. Answer is हाँ, that is 12 into 10 is power minus 26. डिग्री बात देखो 12 into 10 is power minus 26. चलो, this is your answer. अर्जुन आया ना? गुड. बस इसे बेटा उलट करना है का ये मोरे वैल्यू पुट करता दैट इज माइनस ऑफ p की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 into 10 is power minus 30 into 6 into 10 is power 4 into half of minus 1. तो इसको सॉल्व करके ये माइनस माइनस ये माइनस हाफ आ जाएगा. इसको सॉल्व करके ठीक है राइट बेटा? आज के लिए हम इतना ही करेंगे. ठीक है, तो बेसिकली आज बेटा हमने दो मेजर टॉपिक्स को खत्म किए. दैट इज डाइपोल को खत्म करते हैं. ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. डाइपोल प्लेस एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके ऊपर